I think I'm left. Am I lag or not? कैसा आपका दुनिया? Wait a second. Okay, I'm live. So hi guys, this is Seb Yamaha from not Simeon. This is Prasoon Varshney from Prasoon Varshney channel. And currently you are watching video number 31 of Study with Seb video series. Study series actually. So this is video number 31 of consistency and productivity. This is not just life here, this is a productive life. Here we do productive stuff with consistency. We are learning skills. We are on a journey of learning new skills every day, polishing skills every day. Do whatever I'm doing, whatever just that will benefit my career. That's it. And these streams are also my part of building skills. From these streams, uh, I'm able to building my skill set, communication skill set basically. So yeah, it's good. It's all good. Now, so we will do. I think 4 sessions for today. Okay. Uh, I was not present yesterday because due to some work. Okay, due to some responsibilities. Not responsibilities. There are lots of responsibilities on my okay, on mine. So yeah, basically now for today's target will be of 4 sessions. We will do 4 sessions for sure, and my mid-sep will start on 8th Feb. So we will prepare. I will prepare for that also. Okay, today's weather is so nice. You know, it's raining outside and it's so chilled already. Okay, and coming to my load news, my loan hasn't approved. They didn't approve my loan. They said no, you can't take loan. You can't take an education loan because you are not a student. You are a proprietor of some company, so you can't take student loan. They said. What I gonna do? I don't know, but for sure that basically I don't know what to do. Thank you guys so. वक्त तो हो रहा है लेकिन सही लेंगे थोड़ा सही रहने लगते कोई नहीं वक्त आता है कुछ नहीं होता लाइफ में सब चीज चलती ही रहती है so yeah today we will study discrete mathematics for sure and C programming to start my targets so yeah, let's do it.
Oh, hi. One second, bro. Hi, Mr. Robot. Hi, hi, hi. Hello. Am I audible? One second. I'm just coming. I will. Wait a sec. I'm just coming. Just a casual break.
Yups, 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 yups. Hello, 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 hello. Hello, bros. We did one session successfully. 5 Mr. Robot. Hello, hello. Are you there? Hello, hello, hello. We completed one session and yeah. Hello, Mr. Robot. Okay, okay. How are you, buddy? How are you? You are good? I'm fine. I'm good. But sometimes what happens that when you are unable to reach your goal, we become frustrated. Same happens with me today. Please tell me can over how can overcome it. Acha, I never give up. How can I give suggestion, bro? You have to motivate yourself because no one can motivate you until you and yourself, your soul. No one can motivate you, bro, until you yourself. I just hello. जिंदगी में आगे बढ़ते चलो यार. एक लाइन थी डीनो जेम्स की शायद, जिंदगी में प्रेशर कभी कम नहीं होगा मेरे भाई, बड़ों का बड़ा सपनों का साइज तो बड़ा प्राइस और सेक्रीफाइस. ये सुन रहे हो? ने ले तू सबकी राय, ने मतलब नहीं ले तू सबकी राय, कोई नहीं चाहता है भलाई, करता जा बस लेफ्ट एंड राइट, जस्ट वेट फॉर परफेक्ट टाइम. ये एक लाइन थी डीनो जेम्स के पास. एक सेकंड. फर्स्ट हेलो मिस्टर रोबोट. I forgot to ask your name, bro. जिंदगी में प्रेशर कभी कम नहीं होगा मेरे. अरे भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे ही कोई दोस्त हो जो टांग खींच रहे हो. है भाई. विशाल विशाल सावरिया तो नहीं हो आप?
ऐसे लग रहा है। नॉट अ मोटिवेटर यार। सुना होगा वो अपने लाइन, कहते जिंदगी में प्रेशर कभी कम नहीं होगा मेरे भाई, पढ़ो सपनों को साइज तो बड़ा प्राइस हो सैक्रिफाइस। जिंदगी में प्रेशर तो कभी कम ही नहीं होगा यार। ये सोचो कि प्रेशर कम हो जाए तभी। माय लिंक्डइन विजिटर विशाल। ओके। हाँ भाई, आ रहा है ठीक है, कुछ समझ गए। ओके ओके, मुझे लगता है ना मेरे दोस्त भी स्ट्रीम्स पे आते हैं ना, जैसे शादाब खान आप देख रहे हो, और भी दोस्त हैं मेरे जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं, कोई कभी कभार स्ट्रीम पे आ जाते हैं यूजुअली, ऐसे ही मजे लेते हैं वो भी, ऐसे लगता है। कोई नहीं यार, पढ़ते चलो यार, तो जितने जनों से पूछोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। करना क्या है बेसिकली तुम्हारे, मतलब करना क्या है बेसिकली, गोल क्या है? गोल क्या है, देखो चलो तुमसे 5 मिनट बात करते हैं आराम से, गोल क्या है तुम्हारा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है अल्लाह? भाई आपके साथ पढ़ाई करूंगा मैं भी, नहीं वो बात तो सही है, लेकिन क्या सीन है, चलो अभी 5 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद 50 मिनट का सेशन होगा, फिर आप सेशन में चले जाना, पढ़ाई करना 50 मिनट सेशन में, घड़ी में लगा लेना टाइम, ठीक है, 50 मिनट सेशन में। उसके बाद वी विल टेक 10 मिनट ब्रेक, वी विल टॉक आल्सो। बताना आज क्या पढ़ने जा रहे हो मुझे, वो अचीव करा नहीं करा मुझे बताना। पहले तो मुझे अपना गोल बताओ, तुम्हें करना क्या है, बनना क्या है? Just tell me of your goal. Okay, always connected. अच्छा अच्छा, गुड 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 गुड, पाइथन पढ़ रहे हो आज? तो तुम्हें गोल क्या है तुम्हारा? गोल बनना क्या है तुम्हें, जो तुम्हारा अचीव नहीं हो पाया, क्या अचीव नहीं हो पाया आज? तो तुमने लिखा था कि when you are when you are unable to reach your goal, कौन सा गोल था जो तुम अचीव नहीं कर पाए आज, क्या बात थी? भाई वो डाटा साइंस और यूपीएससी। ओके। अच्छा क्या लगता है, मतलब लॉन्ग टर्म गोल क्या है, पैसे कमाने हैं या? अरे मैं बंद कर दूंगा मम्मी, लाइट आती हो, एक सेकंड। यूपीएससी और डेटा साइंस, क्या करने मजा क्या आता है, मतलब कि ये प्रोग्रामिंग करने में मजा आता है नहीं आता, ये बताओ। जैसे मैं अपनी बताऊँ तो मुझे तो मजा आता है रकम सुनाने में, मजा आता ही नहीं आता।
मैं बताऊं अगर तो यार, देखो मेरे भी लॉन्ग टर्म गोल है कि मुझे भी प्रोफेसर बनना है। ठीक है, मुझे भी था कि मैं पढ़ाने का मुझे भी बहुत शौक है, मुझे प्रोफेसर बनना है। लेकिन मैं इस समय मतलब पहले मैंने सोचा, यही सोचा था कि ये एमसीए के एमटेक कर लूँगा, एमटेक के बाद पीएचडी कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मुझे फाइनेंशियल स्टेबल होना पड़ेगा खुद। तो इसलिए पहले मैं जॉब करूँगा, जॉब क्या फाइनेंशियल स्टेबल होऊंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि पीएचडी परस्यू करी जाए। तो आप भी ये कर सकते हो कि अगर पहले तो यार देखो, ये बात सच है कि एक गोल तो बनाना पड़ेगा। सुनने को, एक गोल तो बनाना पड़ेगा तुम्हें। डेटा साइंस में बना लो, क्या हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं। पहले एक बार फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ, फिर यूपीएससी क्रैक कर लेना। फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ एक बार, और क्या है। हाँ तो बहुत ऑप्शन है ना यार, तुम कर सकते हो ना। जरूरी थोड़ी ना है कि प्रोग्रामर मतलब कि 30 दिन में मतलब बैठे बैठे पैसे कमाता है, जरूरी थोड़ी ना है। तो बहुत कुछ कर सकते हो अपना प्रोग्रामिंग से। मतलब कि अगर तुम्हें पैसे कमाने का, तुम इससे तुम स्टार्टअप खोल सकते हो, अगर तुम्हें एक्सपीरियंस हो जाता है तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो अगर बात ये है ना कि आज मौसम बहुत खराब है। तुम्हारा दिल जो कह रहा है वो करो यार। तुम यूपीएससी डाटा साइंस में कंफ्यूज हो रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग तो भी डाटा साइंस ही कंटिन्यू करो फॉर सिक्योरिटी पर्पस। बट इफ यू हैव गट्स, सिक्योरिटी मतलब कि डेटा साइंस में अभी जॉब सिक्योरिटी है, तो एक बार तुम फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ। नहीं यार, यूपीएससी को हटा दो बिल्कुल अब दिमाग से, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो यूपीएससी। और तुम्हें अच्छा लगता है प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करो, यूपीएससी के पीछे मत भागो बिल्कुल। यूपीएससी में नहीं है ना जॉब यार। अगर तुम जॉब सिक्योरिटी चाह रहे हो तो यार यूपीएससी में ये है कि तुम तैयारी कर रहे हो, अगर नहीं आता है नंबर तो इसमें तो यार तुम पढ़ोगे तो। नहीं नहीं, देखो बात ये है ना, मेरे को थैंक्स मत करो पहली बात तो यार, मैं नहीं हूँ कुछ, मैं खुद पढ़ रहा हूँ अभी। लेकिन ये है कि अपना यार फोकस यार एक ही बनाओ यार, प्लीज। ये भटको मत अपने गोल से। ये अभी डाटा साइंस ही बनाओ तुम, मत करो ये यूपीएससी के पीछे। पहले एक बार फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओ। माँ बाप अभी तो क्या कहते हैं, क्योंकि कब तक माँ बाप से पैसे लोगे। अभी तो पापा के पैसे पे इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, उसके बाद अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो यूपीएससी नंबर नहीं आए तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अगर थर्ड ईयर के बाद से तुम्हारी जॉब लग जाएगी, थर्ड फोर्थ ईयर में, और फिर तुम फाइनेंशियल स्टेबल हो जाओगे। अगर फाइनेंशियल स्टेबल हो गए तो उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करके देखो, रात में या फिर कुछ भी देखो अपने हिसाब से, अगर हो जाए तो। मेरा दोस्त है जो मेरे संग पढ़ता है, वो भी। हाँ और क्या। यूपीएससी किस पर्पज से करना चाहते थे वैसे, अगर मतलब किसी की मदद करने के लिए क्या सीन था। मदद करनी है तो अपने नॉलेज तुम किसी को मतलब कि प्रोवाइड करके भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। चलो जो भी आया, ब्रेक टाइम हो गया है, अब जाओ पढ़ने। ठीक है, स्ट्रीम बंद करो, जाओ।
चलो स्ट्रीम बंद करो, जाओ पढ़ने, ठीक है। डेट पाइथन पढ़ो, 50 मिनट बाद आना स्ट्रीम पे, ठीक है। चलो जाओ जाओ जाओ, कुछ और मत खोलो, जाओ स्ट्रीम पढ़ो, चुपचाप चुपचाप पढ़ो, जाओ। मैं भी पढ़ने आ रहा हूँ, मेरा भी ब्रेक टाइम होगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चलना है। लेट्स स्टडी। ओके ओके ओके, गो 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 गो, बी प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव बनो, प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव, डिस्ट्रैक्ट मत हो, प्रोडक्टिव बनो, पढ़ने से ही होगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, जाओ 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 जाओ। ओके 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 ओके। So this is our second session. Okay, so statement.
So great, okay, shit. We have now to do universal evaluation and quantifier. These are the most important quantifier mathematics. Okay. However, there is no limitation on the number of different quantifiers defined, such as food.
From this presentation onwards, we are starting with a new chapter, that is nested quantifiers, and in this particular presentation I will introduce you to the concepts of nested quantifiers. First, we are starting with the definition of what is nested quantifier. Two quantifiers are said to be nested if one is within the scope of the other. Let me tell you that two quantifiers are said to be nested, okay, if one quantifier is coming within the scope of the other quantifier. For example, here you can see we have two quantifiers. One is for all and the other one is there exist, right? There exist is coming within the scope of for all. So we can say these two are nested quantifiers, right? Here you can see that there exist is coming after for all. We can say that there exist is within the scope of for all. Okay. After this we have a propositional function, that is qx comma y. That's not a problem. Please note that anything within the scope of the quantifier can be thought of as a propositional function. We know that there exists y, qx comma y is coming under the scope of this quantifier for all. So we can replace this by some propositional function. That is why I have replaced there exists y, q, x comma y by this propositional function px. This p can be replaced by anything. Okay, that's not a problem. So we can write this as for all x px. Okay, instead of writing for all x there exists y, q, x comma y, we can also write this as for all x px. Later we can expand px to there exists y, q, x comma y. That's not a problem, right? Now let me tell you, there are different combinations of nested quantifiers available. Here you can see I'm considering all four combinations, okay, because we have two quantifiers. We can arrange them accordingly. That is why we can obtain four different combinations. Here the first one is for all x, for all y, q, x comma y. For all x there exists y, q, x comma y. There exists y for all x, q, x comma y. There exists x, there exists y, q, x comma y. Let me tell you, for the first one and the last one, the order doesn't matter. One. By middle two, the order of quantity x for of q, x comma y. There exists x, there exists y, q, x comma y is equivalent to there exists y, there exists x, q, x comma y. Also, for all x there exists y, q, x comma y is not equivalent to there exists y for all x, q, x comma y. It should be well noted. Okay. Let's consider example 1 on nested quantifiers. Let x and y be the real numbers and px comma y denotes x plus y is equal to 0. Okay. So this is the propositional function px comma y which denotes x plus y is equal to 0, and domain consists of all real numbers. We are considering two variables x and y here, as you can see, right? Find the truth values of for all x, for all y, px comma y. True. For all x there exists y, px comma y. There exists y for all x, px comma y. There exists x, there exists y. Okay, possible to mix this for all real number true to 0. Also, for all y for all x, px comma y is actually equivalent to for all y for all x, x plus y equal to 0, which can be written as for all real numbers y and x, x plus y is equal to 0, which is similar to this statement, right? For all real numbers x and y, x plus y is equal to 0. So it is clear from this fact as well that for all y for all x, x plus y is not equal to 0. Okay. So the truth value for the first part, that is for all x, for all y, px comma y, is actually false. Okay. Now let's consider part B, that is for all x there exists y, px comma y. For all x there exists y, px comma y can be written as for all x there exists y, x plus y equal to 0. Now how to read this statement? For every real number x, there exists a real number y such that x plus y equal to 0. Isn't that so? We know that y depends on x, right? For every real number x, there exists a real number y such that x plus y is equal to 0. Now let me tell you that this is true, right? We can say that this is true because for every real number x, there is at least one real number y for which x plus y is equal to 0, right? You can choose any real number is equal to 0, equal to 0, y, which makes x plus y 0, right?
We can choose y as minus 1. Let's say if we select x equal to minus 1, then we have y equal to 1. If we choose x equal to 1 by 2 number x, we just have to find just one value of y for each x such that pxy becomes 2. These are the steps you can follow, right? Please note that value of y depends on the value of x. That is why I'm saying we just have to find one value of y for each x. Okay. Now let's consider part C. There exists y for all x px comma y can be written as there exists y for all x plus y equal to 5 to 0. Every real true. No, let me tell you, this is not true. It is asking us to find a real number y for which pxy becomes true by plugging in every real number x. Okay, so it is asking us to find some real number y. We just need one real number. Okay, for which pxy becomes true by plugging in every real number x. We have to plug in every real number x. What is pxy in our example? Take some real number y. Let y. Now we have to plug 1 by 2 comma 1 is false, right? Real number y for which pxy part of x y real numbers x and y, it is true, right? To 0. X from y is this y there is. Hi there, my name is Chris Americos, and I've been teaching English for the last 11 years. Let's discuss example 2 on nested quantifiers. Here comes the example 2. Let x 0 while in this presentation, we will consider example 3 on nested quantifiers, and here is example 3. Let qx comma what are the truth for all x for all y qx comma y comma z. We know that this is equivalent to there exists z for all x for all y x plus y equal to z, right? Let's write the equivalent English sentence. There exists some real numbers z. There exists some real numbers z such that for all real numbers x and y, x plus y is equal to z. Let's just find out that this is true or not. Let z is equal to 2. We have to find out some real number z such that for all real numbers x and y this becomes true. We just have to find out some real number z. Okay. In this presentation, we will learn how to translate English statements to statements involving nested quantifiers. So let's get started. It is not difficult to translate English statement to its equivalent logical expression if we follow the following steps. I'll tell you certain steps which helps you to translate the English statement to its equivalent logical expression. Okay, let's see step number 1. Read and understand the English statement given in the question. It is important to read and understand the English statement which is available in the question. Then only it would be easier for you to come up with the domain of discourse, the quantifiers and the variables in the particular English statement. Okay. Now let's see step number 2. Find the domain of discourse according to the statement. As you have understood the statement, now it is easier for you to find out the domain of discourse, right? Now let's see step number 3. Find the associated quantifiers. Now it's time to find the associated quantifiers, right? After this, step 4 is to rewrite the statement so that the domain of discourse and quantifiers are properly visible. This is an important step, let me tell you. You have to rewrite the statement so that the domain of discourse and the quantifiers must be visible. After this, the final step is to introduce the variables in the statement. And that's it. After this step 5, you could see the statement properly and you would be able to convert it into its equivalent logical expression. Now let's see one example. Translate the statement the sum of two positive integers is always positive into an equivalent logical expression. Now our job is to translate this statement, that is the sum of two positive integers is always positive, to its equivalent logical expression. For this, of course, we will follow all the 5 steps which we have seen already, right? Let's just see the statement once again. The sum of two positive integers is always positive. Step 1 is to read and understand the statement, right? We first read the statement and understand the statement. Okay. Now let's do positive integers is always positive, no matter what, which two integers you will take. Their sum will always be positive, right? Let's see step number 2. As you have understood the statement, now it's time to find the domain of discourse. Here you're talking about integers, right? And that two positive integers, or you can take integers also. Let us suppose that the domain consists of all integers.
Now step 3 is to find the associated quantifiers. You can see that in this statement, the sum of two positive integers is always positive. We are actually talking about any two positive integers, no matter what, right? So actually, we are talking about for all quantifier. This is a general statement. The sum of two positive integers is always positive. You're not talking about few positive integers. You're not talking about there exists some positive integers. You're talking about all positive integers, no matter what, right? Therefore, we will use for all quantifier, okay? Now, step number 4 is to rewrite the statement. We know that this is the original statement. The sum of two positive integers is always positive. Now we can rewrite this as for every two integers, if the two integers are positive, then their sum is also positive. We know that we want to use for all quantifier. We are talking about every two integers, right? That's why we will write for every two integers. Now obviously this is for all quantifier. Implication will come into picture. That's why we'll take if then statement. That is, if the two integers are positive, then their sum is also positive. Isn't that so? We are talking about every two integers. First of all, we have to check whether they are positive or not. If the two integers are positive, then their sum will definitely be positive. So the rewritten statement is for every two integers, if the two integers are positive, then their sum is also positive. Now let's see step number 5, which is introduce the variable. This is the last step. Now here we are talking about two positive integers, isn't that so? So we'll take two variables. Two variables are required to represent two integers. Let us suppose that integers are represented by the variables x and y. Then we can rewrite this statement as for every two integers x and y, if x and y are positive, then x plus y is also positive, right? Now it is easy. Now you can easily write an equivalent logical expression for all x, for all y. That means for every two integers x and y, that means for all x, for all y. If x and y are positive, that means if x is greater than 0 and y is greater than 0, then x plus y is also positive. That means x plus y must be greater than 0. For all x, for all y, x greater than 0 and y greater than 0 means x plus y is greater than 0. So this is the equivalent logical expression for the statement the sum of two positive integers is always positive. So you want to be a software engineer at Google? Go to algoexpert.io. Pick a question, read the prompt, write some code, run your code, write some more code, run your code again. Get stuck? Check some hints. Still stuck? Watch our comprehensive explanation videos that cover the underlying algorithm at hand and that give you a line-by-line coding walkthrough of the solutions. Algo Expert is the all-in-one platform for you to prepare for your coding interviews, ace them, and land your dream job. So, what are you waiting for? Do you want to be an algo expert? Let's discuss example 2 on translating English statements to statements involving nested quantifiers. Here is example 2. Translate the statement a negative real number does not have a square root that is a real number into a logical expression. This is the statement available. A negative real number does not have a square root that is a real number. We want to convert this statement to its equivalent logical expression. Let's just rewrite this statement once again. A negative real number does not have a square root that is a real number. Let's follow the steps one by one. Step 1. Read and understand the statement. In this statement, A negative real number does not have a square root that is a real number. एक तो नेगेटिव रियल नंबर है just it is written, a negative real number does not have a square root. That is a real number. So when we take the square root of a negative real number, then the result of the square root must not be a real number.
That is what the statement is saying. A negative real number does not have a square root, that is a real number. Step 2 is to find the domain of discourse, right? Let us suppose that domain consists of all real numbers because we are talking about real numbers, right? Now step 3 is to find the associated quantifiers. We are talking about a negative real number does not have a square root, that is a real number. We are talking about all negative real numbers, right? So it is clear that for all quantifier will be used. And then we are talking about all negative real numbers have a square root which is not real. That means we are talking about their exist quantifier as well. So we are talking about all negative real numbers and their square roots, right? So for all negative real numbers, we are talking about their square roots. Here their exist quantifier will be used. We'll see that one. Now step 4 is to rewrite the statement. We know the original statement is a negative real number does not have a square root, that is a real number. Now we will incorporate all the quantifiers. For all real numbers, if a real number is negative, then its square root is not real. Isn't that so? We are talking about all real numbers, right? So for all real numbers, if a real number is negative, first we will check that if a real number is negative, then its square root is not real. So this is the rewritten statement. Now let's introduce variables. For all real numbers x, if x is negative, then it is not the case that there exists some real number y such that x equal to y square. We have introduced a variable x, right? So for all real numbers x, if x is negative, then it is not the case that means we are taking the negation, then it is not the case that there exists some real number y. That is why I told you that I am using this there exists quantifier, because we are talking about a square root. It is not the case that there exists some real number y such that x equal to y square. Let us suppose that y is the square root of x. Here I am supposing that y is the square root of x, then y is equal to square root of x. We can rewrite this as y square equal to x, right? So I am considering this y, which is the square root of x, right? It is not the case that there exists some real number y. That means we are talking about a square root of x. That's why we have to write this x equal to y square. Okay? It is clear that if x is negative, then there is no real number y such that x equal to y square. Isn't that so? So the equivalent logical expression is for all x, if x is less than 0, that means if x is negative, then this implies that there is no real number y such that x equal to y square. Okay? For all x, if x is less than 0, this implies not there exists y. Not, this is important. Not there exists y, x equal to y square. As simple as that. So square root is represented with this x equal to y square. Okay, we are talking about all real numbers, and if x is negative, then it is not the case that there exists some real number y such that x equal to y square. This is the way you are introducing the variables. There is a requirement of two variables, x and y. One is representing all real numbers, the other one is representing the square root of those real numbers. Okay, this must be clear to you. According to the 2018 Stack Overflow Developer Survey, if you're a professional software engineer, there's a 71% chance that you use JavaScript. You might not like it, but you use it. In fact, you might hate it, but you use it, likely every day, because you have to. JavaScript is, for better or worse, everywhere. Browser apps, server-side, mobile, desktop, IoT, embedded, everywhere. So let me ask you something. Have you kept up with the changes to JavaScript? If your code still looks like this, or this, or this, then the answer is probably no. You haven't kept up. The syntax you're writing is called ES5. It came out in 2009 and was replaced in 2015 with a new syntax called ES6. There have actually been a number of new changes since then, but ES6 is the big one. ES6 introduced dozens of substantive changes to the JavaScript language, and those changes are now widely supported by different browsers and environments. So in 2019, if you're writing JavaScript, ES6 is the syntax you really need to know. Welcome to Keeping Up with the JavaScripts, a self-paced online course and learning community that's going to help you do exactly that.
keep up with the changes to the JavaScript language. This is part 1, ES6, and this class is designed for two different audiences: people who have never coded in JavaScript before and want to learn it, and experienced engineers who know the old style of JavaScript, ES5, and want to upgrade their skills. So whether you have experience or not, this class is for you. We're going to cover everything you need to know about the new version of the language, but not just let and const and arrow functions, no. We're going to go deep. We'll be covering topics like Every student of XYZ university has a computer or has friend who has a computer. So we are talking about every student of XYZ university, let me tell you. And we are saying that every student of this university has a computer or has a friend who has a computer. Okay. We have to translate this particular English statement to its equivalent logical expression. For this purpose, we will follow some steps. First step is decide the domain first. It is important to decide the domain. Quiero aprovechar este momento desde el fondo de mi corazón. In this presentation, we will learn how to negate nested quantifiers. Before moving on to understand how to negate nested quantifiers, I would like to ask one question. What is the negation of the expression there exists x px? It is simple. We know the De Morgan's laws, right? Not of there exists x px is actually equivalent to for all x not px. Isn't that so? We can move our negation inside, and this there exists quantifier will get converted to for all quantifier. Isn't that so? Now, what is the negation of for all x px? This is also simple. According to De Morgan's law, not of for all x px is equivalent to there exists x not px. When we move this negation inside, then this for all becomes there exists. Isn't that so? Now let me tell you that negating nested quantifier is as simple as negating single quantifier. We have inside quantifiers by applying De Morgan's laws for negating single quantifiers. So according to De Morgan's law, for all will get converted to there exists and there exists will get converted to for all. Isn't that so? So let's put not in front of any quantifier, right? Here I'll move this negation towards right. Then obviously this expression that is there exists x not there exists y, xy equal to 1 becomes there exists x for all y not xy equal to 1. Because we know according to De Morgan's law, there exists quantifier becomes for all after moving the negation towards right. Isn't that so? The new expression is there exists x for all y, not xy equal to 1. We can replace this not xy equal to 1 by xy not equal to 1. Both are one and the same. So there exists x for all y, not xy equal to 1 is actually equivalent to there exists x for all y, xy not equal to 1. So this is the negation of this particular statement, that is for all x there exists y, xy equal to 1. Okay. Discuss example 2 on negating nested quantifiers. Express the statement someone has visited every country in the world except Libya using quantifiers. Then form the negation of the statement so that no negation is to the left of a quantifier. Next, express the negation in simple English. Do not simply use the words
Good. It is not the case now. Okay. So here is the statement: someone has visited every country in the world except Libya. We have to represent this statement using quantifiers. Then we have to form the negation of the statement so that no negation is to the left of the quantifier. Okay. We have to move it towards right. Then next express the negation in simple English. This is important. For this, let us suppose that Vx comma y denotes x has visited country y. Okay. Domain of x is nothing but all people, and domain of y is all countries. Fine. Now, someone has visited every country except Libya is equivalent to there exists x for all y, Vx comma y if and only if y not equal to Libya. Isn't that so? Here I am using if and only if operator because here it is written someone has visited every country except Libya. Obviously, someone has visited every country. This is denoted by Vx comma y. Here we are considering some person who has visited every country, right? Except Libya. Y must not be equal to Libya. So this must be Vx comma y if and only if y not equal to Libya. Now we will take the negation of this statement. Negation of this particular statement is for all x there exists y, Vx comma y if and only if y equal to Libya, right?
Here you should remember that negation of P if and only if Q is nothing but P if and only if not Q. That is why if you put not operator in front of this, then this is actually equal to Y equal to Libya. Isn't that so? And we can write the equivalent English statement of this particular expression as every person has either visited Libya or has not visited any other country except Libya, right? Every person has either visited Libya or has not visited any other country except Libya, right? Okay, friends, this is it for now. Thank you for watching this presentation. Attention house music fans! Do you want a free download? Then hurry, because I'm giving away only 100 free copies of this brand new piano house track. What the heck is going on with the state mathematics? Oh, it's too tough. No one has climbed every mountain in the Himalayas using quantifiers. Then form the negation of the statement so that no negation is to the left of a quantifier. Next, express the negation in simple English. Do not use the words, it is not the case that. Similar to the previous question, but obviously the statement is different. No one has climbed every mountain in the Himalayas. Okay. For this purpose, let us suppose that Cx, y denotes x has climbed mountain y in the Himalayas. Okay, so x is representing some person and y is representing some mountain. Okay, no one has climbed every mountain in the Himalayas can be translated to not there exists x for all y, Cx, y. So there is no person in this world who has climbed every mountain in the Himalayas. Fine. Not there exists x for all y, Cx, y is the logical expression of this particular statement. No one has climbed every mountain in the Himalayas. Now we are interested in taking the negation of this logical expression. So we will put a not in front of this expression. This is how it looks like. Not, there exists x for all y, Cx, y. Now you know what to do next. These two negations get cancelled. So what we are left with is there exists x for all y, Cx, y. This is the resultant expression. There exists x for all y, Cx, y. Which means there exists some person who has climbed every mountain in the Himalayas. There exists some person who has climbed every mountain in the Himalayas. As simple as that. The original statement was no one has climbed every mountain in the Himalayas. Obviously, the negation of this statement is there exists some person who has climbed every mountain in the Himalayas. It is not the case that no one has climbed every mountain in the Himalayas, right? After discussing this example, I would like to give you one homework problem. Express the negation of the proposition. There is a student in this class who has taken every mathematics course offered at this school using quantifiers and in English. Fine. This is the homework problem. Solve this problem and post your answers in the comment section below. To wake up in Brahma Muhurt is an excellent way to put our life on proper course. From this presentation, Okay. So we have completed successfully 2 sessions. Okay. It's too hectic, you know. Discrete mathematics, proposition logics, predicates again. These all are very hectic. Okay, let's have a break.
Let's have a break. Yeah, let's do this because it's break time. We completed 2 sessions successfully. Yo, bro.
Okay. How did you know? I must use all social media while walking. Bro, I know because social media is so addictive. You can't resist. No, social media is an addiction now. Ah, क्या कहते हैं आ गए टहल वहल के ठंड पड़ रही है भाई बहुत वहाँ ठहला नहीं आ रहा अभी बारिश हो रही है ना इट वाज रेनिंग आउटसाइड जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं बहुत सन्नाटे का ब्रो यार बस यही है कि यार सोशल मीडिया से दूर रह करो अब कुछ करना है तो जितना दूर रह सको उतना बढ़िया क्योंकि तुम देखो ना तुम बस स्क्रॉल डाउन कर रहे हो कभी पूछा है कि मैं क्या दे रहा है मैंने यही क्वेश्चन पूछा था अपने आप से मैं स्क्रॉल डाउन कर तो रहा हूँ लेकिन मिला क्या मुझे कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिलता भाई सोशल लाइफ चाहिए तो एक बार अच्छी वो कमा लो अच्छा स्टेटस कमा लो तो अपने आपकी सोशल लाइफ आ जाएगी Pro which software are you using for streaming? I'm using open broadcaster software. It's open source software OBS. नाम सर्च मारना कभी OBS OBS नाम लिख दे रहा हूँ OBS OBS Studio You are using OBS so you stream hmm? You stream don't know how to create themes and timer like you okay YouTube पे सर्च मार लो यार मैंने भी YouTube पे सर्च मार के करा है सब एक तो मैं कैसे बताऊँ एक्सप्लेन कैसे करूँ हाँ मैं समझ गया ये टाइमर वगैरह लेकिन एक्सप्लेन कैसे करूँ देखो लिंक्स आते हैं साइट है एक साइट डाल रहा मैं कुछ साइट बता रहा हूँ ई कार्ड मीडिया का कुछ साइट है मुझे याद नहीं आ रहा ई कार्ड मीडिया साइट है कोई उस पर सारे लिंक्स मिलते हैं तो मैंने करीब 1 महीना हो गया just some gaming stuff in lockdown oh okay good so time is over I think blah 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 time is over back to work let's kill this break time I think we have completed 2 sessions or 3 sessions
We have completed 2 sessions. Okay, now kill this break time. Break time is over, and over. 10 minutes is over, break time is over. Now it's okay. Back to study. No talk, no worries. हेलो सर, निखिल सर, सेशन 2 चल रहा है, आ जाओ पढ़ लो आप भी। मिस्टर रोबोट भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ लो, मेरा सेशन चालू होने वाला है। कल हम आपकी वजह से स्ट्रीम नहीं कर पाए थे सर, कुछ काम लग गया था। So back to study. Discrete mathematics is so hectic. हाँ भाई से पढ़ो। आना ब्रेक में 50 मिनट पढ़ लो, फिर आता ब्रेक में। ओके। बहुत पूरा चैप्टर है। Someone has visited every country in the world except Libya. मतलब कि कोई someone has visited every country. Someone मतलब कि there is a person who has visited every country in the world, but not Libya. But how to make, how to use यार quantifiers? I don't know यार. For all x, for all y, there is a person. क्या है बहुत ही बकवास। Presentation onwards, we are starting with a new topic, that is the resolution principle, and in this particular presentation we'll go through with some preliminaries before moving on to this topic. So let's get started. The resolution principle is used to prove whether an argument is correct or not. This principle is actually helping us in proving whether an argument is correct or not. Who's on the press and fans information?
Welcome to the niche finalization system. If you're somebody who's actually confused about your topic and your niche and you really want to nail it within the next few minutes, this system is going to help you. So, what I would like you to do right now is spend the next 3 to 4 minutes answering the questions below, and then the questions are going to be coming one by one. And in each of the questions, each of the segments, I'm actually going to explain to you how to answer that question so that by the end of this, you'll have. From this lecture onwards, we're going to talk about the rules of inference in propositional logic. And in this particular lecture, we will talk about the basic terminologies involved. Here P is the premise and Q is the conclusion. Mission conclusion are just propositions. If Right? hypotenuse. Let's the third term, that is argument. Argument is a sequence of Hypothesis. Hypothesis and conclusion. Okay. of statements that ends with a conclusion. Or it is a set of one or more premises and a conclusion. Simple. Now let's talk about what is a valid argument. An argument is said to be valid if and only if it is not possible to make all premises true and the conclusion false. That is, it is not the case that if Q is true, then Q is false. If P is true, then Q has to be true. Right? Now let's consider one example of an argument. If I love cat, then I love dog. I love cat, therefore I love dog. Now, this is the first premise. Let's say it is P1. This is the second premise. Let's say it is P2. And this is our conclusion that is indicated by therefore. Hence, I love dog is a conclusion. Right? Now let's say I love cat is represented by P and I love dog is represented by Q. Now this statement is of the form
P implies Q, right? This is simply P, and here this is Q. So we can write this argument as P implies Q, then P, therefore Q. Okay. We can also write this argument as P implies Q and P implies Q. These are the two premises, and this is the conclusion. Premises implies conclusion. Okay. Now, this conclusion can be true or this can be false. It depends on the premises, right? We initially assume that all these premises are true. And in order to prove that this argument is a valid argument, we need to make this conclusion true. Because all premises are true, therefore conclusion must also be true. As P is true, therefore here also P is true. And if P is true, then Q must also be true in order to make this compound proposition true. We cannot make this Q false. If we make this false, then this whole compound proposition becomes false, which is against our assumption, right? Hence Q must be true. And if Q is true, therefore the conclusion must also be true, right? Because our conclusion is Q only, hence this conclusion is also true. As there is no way we would be able to make conclusion false by taking premises true. And hence we can say that this argument is a valid argument, right? This is just another way of representing this argument. P implies Q and P. Why I'm writing and over here? Because these two premises must be true, right? It is not the case that one premise is true and the other one is false, right? So these two premises must be true and conclusion must also be true. So we can conclude that this whole argument is a valid argument. Let's consider one more example. Here I'm saying, if I love cat, then I love dog. Second premise is I love dog, and the conclusion is I love cat. As this statement is of the form P implies Q, I love dog is Q, therefore P, because I love cat is P. Can we say if P implies Q is satisfied and Q is satisfied, then P also satisfied? Let's see. Initially we assume that P implies Q is true and Q is also true, and we need to prove that P must also be true. Then only we can say this argument is a valid argument. Now as Q is true, then here also Q is true. And if Q is true, then P can be true or P can be false. If P is false, then false implies true is true. And if P is true, then true implies true is also true. Let's take P false. Now, if P is false, then here also P is false. As we would be able to make all premises true and conclusion false, hence we can say that this argument is an invalid argument. Right? So the final conclusion is that whatever the argument we make over here is invalid. If you have a little bit of anxiety around the idea of taking calculus, I would encourage you to give it a chance. We don't all learn in the same way. So we are going to be teaching the same content in different ways. I'd say my teaching style is somewhat laid back. I'm the only instructor that's using a blackboard. And I prefer a fountain pen and paper. But I want to make calculus a bit more human. I'll be teaching with a tablet. We're going to look at the infinitely large, the infinitely small. There's going to be a lot of storytelling alongside calculus. I hate to do this to my hometown team, but we're going to look at the Buffalo Bills fan base as our example for exponential decay. In this lecture, we will consider the definition of rules of inference, what exactly rules of inference are, and we will also talk about the different types of inference rules. Let's dive into the definition of rules of inference. First of all, in order to understand the definition of rules of inference, we need to understand what exactly inference is. Inference means deriving conclusions from evidences. Please remember, it is actually deriving conclusions from evidences. Now, evidences are the premises. We already know they are the assumptions. On the basis of those assumptions, we are trying to derive conclusions, and that is what inference is all about, right? Now, what are rules of inference? Rules of inference are the templates for constructing valid arguments. Please note down this point. They are the templates for constructing valid arguments. Basically, rules of inference themselves are the valid arguments, and they are used to construct
more complicated valid arguments. And that is what rules of inference is all about. After considering the definition of rules of inference, let's consider different types of inference rules. First rule in this list is modus ponens rule. P implies Q, P therefore Q. What does it really mean? That means when P implies Q is true, and when P is true, then Q has to be true. This is the conclusion, right? Now, if P is true, we know that if P is true, then Q has to be true. It cannot be false. Therefore, conclusion must also be true, right? This is the law of modus ponens. We can also write this argument as P implies Q and P implies Q. We know that these are the premises, that is P implies Q and P, and this is our conclusion, that is Q. And we know that premises always implies conclusion, right? And hence we can write this argument in this form. Okay, now the second rule in this list is modus tollens rule. According to this rule, P implies Q, not Q, therefore not P. Now as we know, P implies Q is true and not Q is true, therefore we need to conclude that not P is also true. Now if P implies Q is true and not Q is true, then Q becomes false, right? Now if Q is false, then P has to be false. It is not the case that P becomes true, because if P is true, then true implies false is false, right? Now if P is false, then not P will be true. Therefore we can say that our final conclusion becomes true, and hence this argument is a valid argument. Definitely we can write this argument as P implies Q and not Q implies not P, right? Let's consider the third rule in this list, that is hypothetical syllogism. According to this rule, P implies Q, Q implies R, therefore P implies R. Now, if P implies Q is true and Q implies R is true, then P implies R has to be true. Let's try to make this P implies R false by taking P true and R false. Let's see whether we would be able to make it false or not. Let's take P true and R false. Now if P is true, then Q cannot be false, right? Q has to be true. And because Q is true, then R cannot be false, right? Therefore R has to be true. It cannot be false. Hence, this has to be true. And if R is true and P is true, then true implies true is always true. Therefore, we cannot make P P implies R false. And definitely we can write this argument as P implies Q and Q implies R implies P implies R. Let's consider the fourth rule, that is disjunctive syllogism. P or Q, not P, therefore Q. Now let's say P or Q is true and not P is also true. If not P is true, then P becomes false. And if P is false, then Q has to be true. Therefore, finally, the conclusion becomes true. And we can write this argument as P or Q and not P implies Q. Now let's consider the fifth rule, that is addition rule. P
therefore P or Q. How this argument is valid? When P is true, then definitely this is also true. If this is true, then true or with anything is always true. Then the argument is always satisfied, right? Hence we can say that this तो कंजक्शन एडिशन तो बहुत सिंपल है. P is true, then definitely this is also true. If this is true, then true or with anything is always true. Then the argument is always satisfied, right? Hence we can say that this argument is valid, and we can write this argument as P implies P or Q. Let's consider the sixth rule, that is simplification rule. P and Q, therefore P, or P and Q, therefore Q. Or we can write these arguments as P and Q implies P, or P and Q implies Q, right? Now why these arguments are valid? As P and Q that both P is true and Q is also true, and hence both the conclusions are correct. Hence we can say that these arguments are valid arguments, right? Let's consider the seventh rule, that is conjunction rule. P, Q, therefore P and Q. Now if P is true and Q is true, then definitely P and Q becomes true, right? This is according to the conjunction law, and hence it is a valid argument. We can write this argument as P and Q implies P and Q. Now let's consider the last rule of this list, that is resolution rule. P or Q, not P or R, therefore Q or R. Now as P or Q is true and not P or R is also true, therefore we need to conclude that Q or R is also true. How can we prove that? It may be possible that both of them are true, or it may be possible that Q is true or maybe R is true, right? Let's take Q false. And if Q is false, then P has to be true. And if P is true, then not P becomes false. And if not P is false, then R has to be true. Therefore, when Q is false, then R has to be true, right? Now let's take Q2. Let's take P false. If P is false, then not P has to be true. And if not P is true, then R can be true or R can be false. If R is false, then there is no problem because true or with false is always true. And if R is true, then also there is no problem. Therefore, again, Q or R becomes true, right? If we take P2, then not P becomes false, then R has to be true. In that case also, Q or R is true. Hence, we can say that this argument is a valid argument, right? We can write this argument as P or Q and not P or R implies Q or R. Style celebs जैसा हो, so the looks will follow. Smile, pose, and wear the next. Shop. In this lecture, we will learn how to build arguments. If he works hard, then he is a dull boy. And if Randy is a dull boy, then he will not get the job. These are the set of premises. And we need to conclude that Randy will not get the job from these set of premises. That is our job. Okay? Now let's say, let H is Randy works hard, D is Randy is a dull boy, and J is Randy will get the job. Now what we need to do? We first need to convert these premises in propositional variable form. That is, Randy works hard can be rewritten as H. If Randy works hard, then he is a dull boy can be rewritten as H implies D. And if Randy is a dull boy, then he will not get the job can be rewritten as D implies not J, right? And finally, we can say our conclusion would be
therefore not J, right? Because Randy will not get the job can be rewritten as not J. As J is Randy will get the job, therefore not J is Randy will not get the job. Okay. Now we can easily see that this argument is not in the form of any of the rule of inference that we studied in the previous lecture, right? Because here we are having three premises, one conclusion. And we already know that whatever the rules of inference we've already learned, there are two premises in almost all of them and one conclusion. And there are some of them which are having only one premise and one conclusion. So what we can do with this argument? How do we able to come to this conclusion by using rules of inference? What we need to do is, we need to take two premises at the time, any two premises we can choose, and what we need to do is, we need to come up with some conclusion by using rule of inference. Okay? Like for example, we can take H and H implies D. H and H implies D. Now we can apply the rule of modus ponens here and we can come to this conclusion called D, right? Here we applied rule of modus ponens. Okay? So conclusion D can be obtained from these two premises very easily by using rule of modus ponens. And the next step would be to take another two premises and try to come up with another conclusion. We can take D and D implies not J. D implies not J. Please note down that it is not necessary that you would always have to take two premises from this place only. It is also possible that you can take conclusion of one argument as a premise to the other argument. Like in this case, we chose D, which is the conclusion of this argument, as a premise of this particular argument. As here also, in case of D and D implies not J, we can again apply a rule of modus ponens to come to this conclusion called not J by again using the rules of modus ponens. Not J is our desired conclusion, right? That is what we want. So we can say that by using rules of inference, we can build this argument and finally we come to our desired conclusion, that is not J. And this is what we have to learn. Now it is also not necessary to take two premises at a time. In the worst case, you may take one premise also and you can apply either simplification rule or you can apply addition rule, right? But please remember, try to take two premises at a time and try to come up with some conclusion and go step by step there. It is also possible that the conclusion that you get from one argument is of no use for the other argument. So it is not always the case that whatever the conclusion you are getting from one argument can be used as a premise for the other argument. And it may also be the case that conclusion of one argument can be chosen as a premise for the other argument. So there is a total freedom in selection of premises, but your ultimate goal is to obtain the final conclusion. Okay? Let's now take H implies D and D implies not J. H implies D, D implies not J. Okay, H implies D and D implies not J. From these two premises, we can conclude H implies not J by using hypothetical syllogism, right? By the rule of hypothetical syllogism, when there is a premise P implies Q and Q implies R, then we can get P implies R as our conclusion. Now, we can take this premise H, and from these two premises, we can get the conclusion not J, which is our final desired conclusion, right? This is obtained by using rule of modus ponens. As you can clearly see in this example, I chose H and H implies D initially, and here in this example, I chose H implies D and D implies not J. So it totally depends on you what premises you choose, but finally we should get our desired conclusion, that is in this case, not J, right? Okay friends, this is it for now. Thank you for watching this. This is part 2 of how to build arguments using rules of inference, and in this lecture we will consider one more example to help cement the concept of how to build arguments using rules of inference. Let's consider these premises. If it does
Okay. You've been thinking about it constantly, I really can't deny it. All the things you want to say, keep them on side. Forget about Does not rain or if it is not foggy, then the sailing
कभी left to 5. Yo, bro. हाँ bro, दीपक राहुची. I'm from NIT, Kurukshetra. I'm from NIT Kurukshetra, bro.
that is going on. I know you, I think, Aspire Study. Oh, wow. Yes, I'm from Aspire Study. Though. I was from Aspire Study. I am in HU. Good, bro, good. MCA first year, na? Good, bro. I think we have done 3 sessions successfully. Okay, good, bro. I think in MCA, in HU, MCA is 2 years now, na? MCA is 2 years course, na? How you got my recommendation? I don't know. So it's break time. We have completed 3 sessions. Oh, we have done 3 sessions. Now I'm going to go. Okay, let's put this.
तुम तो बस तुम हो, तुम्हारी क्या anyway 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 तुम तो बस तुम हो ऐसे हो जाते हैं ना तुम तो बस तुम हो मिट्टी में कितना कुछ छुपा के रखती है जमीन। कारीगरों की उंगलियां सब झांक लेती हैं। पीतल पे चेहरे देखना, पीपल में सूरतें। सुर ढूंढते हैं बांस में, पत्थर में मूर्तें।
कारीगरों की उंगलियां उतार लेती हैं, पोरों से थाली खोल के संवार देती हैं। काम इनके देखे हैं गुफाओं में, चट्टानों में। नायाब लोग हैं ये घास के मकानों में। मिट्टी में कुछ छुपा है, कुछ लकड़ी में, धात में। इस कारीगर को देखिए, हुनर है हाथ में। मिट्टी में कितना कुछ छुपा के रखती है जमीन। सजाइए अपने घर को 10 लाख से भी ज्यादा कारीगरों के हुनर से। Amazon कारीगर। It starts with a curiosity. Anyone could build a telescope, and anyone could look up at the sky and learn the truth. What is This presentation, of course, we're starting with a new topic, that is the resolution principle, and in this particular presentation, we'll go through with some preliminaries before moving on to this topic. So let's get started. The resolution principle is used to prove whether an argument is correct or not. This principle is actually helping us in proving whether an argument is correct or not. Fine? So we'll see how. But before understanding this, how this principle helps us in finding whether an argument is correct or not, we'll first go through with some preliminaries. The first thing we must understand is the literal. A variable or negation of a variable is called a literal. It should be well noted that a variable or negation of a variable is called a literal. Whenever you see a variable or negation of a variable, you know that it is a literal. Fine. Now, there is one more term which is called clause, and we must understand what this term is. A clause is a disjunction of literals. Okay, you take some set of literals and form the summation of them. The result so obtained is called a clause. Fine. And there is one more term that is called resolvent. For any two clauses C1 and C2, if C1 has literal F2 and C2 is the P clause form, right? We have this literal and this literal. Clause tolerance rule, not Q and P. Implies Q implies not P. This is modest tolerance rule. We can write this in this form as well. Not Q, P implies Q, therefore not P. First we will obtain the clause form of P implies Q. We know that clause form of P implies Q is nothing but a Q. So that's right, to support a great cause, Omaze is giving you the chance to win this 2021 Porsche Cayenne GTS Coupe with taxes. in this presentation, we will use C1 and C2 and C logical consequence of C1 and C2. Then it simply means that if C1 and C2 are true, These are then not the C case, has to yaar. be true. Okay. Now This is assume not that C1 in and our C2 are course. true. So we have Proof of about theorem is this. not This on course. Okay. That's so. This as Basically, the I am looking. What I am looking for is that I am looking for this PPT, paper number 8. What happens when L is false? Proof is a L is valid false, argument. then It's C1 bar blah has to be blah true, blah. Okay, I right? know. Because this clause needs to be Okay. true. Therefore, C1 bar is true. But this means we this don't have a resolvent C clause, is nah. true because of C1 bar. Isn't that so? So it is No. clear from this fact that C is the logical constant. Can't find. Let's continue our discussion on the resolution. So here we will convert this into up to now we have
You can see this is not G. Prevent evil, it would be impotent. Now let's learn this topic fallacies. There are some common arguments which are invalid, though at first glance they seem right. Such a type of argument is known as fallacy. Understand this. There are some common arguments which are invalid in reality, but at first glance they seem right. They are called fallacies. For example, here you can see that P implies Q is true and Q is true. Therefore, P has to be true. This is an argument, right? But let me tell you, this argument is invalid. Although it seems like it is a rule of modus ponens, but it is not. You can see that we have P implies Q and Q instead of P. According to the rule of modus ponens, when P implies Q is true, Hello students, hope you are all well prepared for GATE 2021 to be held on 6th, 7th, 13th and Hello friends, in this series of videos in discrete mathematics, now let's discuss proposition and then I'll continue with predicate calculus and first order predicate logic. You see, it is one of the most important and conceptual topic in discrete mathematics, has a weightage of 2 to 3 marks in GATE and asked in any other public sector examinations. I feel it is also conceptually very important. With this logic, we'll understand how should we reason and true or false. Actually, yes. 5 proposition. If a statement is a proposition, if somebody asks you what is true, what is false, kidding, so you understand what is truth, what is false may changes from scenario to scenario. So according to me, according to even Swami Vivekananda, nobody knows what is truth. You have to find your own truth. But in this subject, if you ask me what is truth, I'll tell you, if something is not false, then it is what? Truth. And if something is not true, then it is what? False. So I think that was a basic of proposition, where first I told you a proposition is any statement written in declarative sense which has only two meanings, either true or false. And then I tell you two डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और उसके एप्लीकेशन की बात करें, दोनों नहीं, कभी भी प्रोपोजिशनल कैलकुलस कहेंगे या उनसे प्रोपोजिशनल लॉजिक कहेंगे। एरिस्टोटल साहब ने इसको बहुत पहले 2300 साल पहले आपके सामने रखा था। और इसके बाद देखिए प्लस वाई एक्स डैश, एक्स और वाई वेरिएबल है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन क्या इन्हें टेक्स्ट लोअर किया? अब इस पर देखते हैं, इस पर अलग अलग कंडीशन देखते हैं। यदि पॉलिटिशियन इलेक्ट हो गए तो वोटर क्या सोचेंगे कि देखिए साहब ये तो जीत गए, अब तो हमको नौकरियां मिलेगी, अब तो हमका हमारा टैक्स लोअर हो जाएगा। अगर पॉलिटिशियन इलेक्ट ही नहीं हुआ तो वोटर को क्या एक्सपेक्टेशन होगी? 100% ऑन द फाइनल, देन यू गेट जो आपको थोड़ी बहुत लिख लीजिए और उसमें इफ एल्स कंस्ट्रक्ट पे तो आप आई हो। तो अगर ये कंडीशन हुई तब कुछ लाइन चलेगी, और जो पी इंप्लाइज क्यू है क्यू देख लिया आपने, तो इफ पी देन क्यू, देन इफ क्यू देन इसे कहते हैं। ओके, ऐसे करता हूं मैं, इन दोनों एरो को जोड़ दीजिए, ये आ जाता है बाय कंडीशन। अब देखिए इफ पी देन क्यू, इसका मतलब ये सीधी सी बात ये है, पी इंप्लाइज क्यू का मतलब ये है इफ एंड ओनली इफ, यानी कि पी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है क्यू के लिए। इफ पी देन क्यू तो कन्वर्सली क्या हो जाएगा? पी कंडीशन सही है तो ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ये ट्रू है। और कह रहे थे स्टेटमेंट है ट्रू होगा यदि ये पी
और ये क्यू, ये दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स। यानी कि अगर आप टिकट लेते हैं और आप फ्लाइट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप टिकट नहीं ले सकते तो आप फ्लाइट कैसे ले सकते हैं? ये फॉल्स कब हो जाएगा? जब दोनों अपोजिट होंगे। यानी कि आप जब टिकट नहीं लेंगे, तो आप कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इम्प्लिसिट यूज ऑफ बाय कंडीशन। अब ये जो अंग्रेजी चीज है ना, ये अंग्रेजी से इसको थोड़ा हम अलग करें। यानी कि यदि आप खाना लेंगे, खाना खाएंगे, तब आपको डेजर्ट। इसका मतलब ये है कि यू कैन हैव डेजर्ट इफ एंड ओनली इफ यू फिनिश द मील। यानी कि आपने देखा बाय कंडीशन हम यहाँ कैसे लगा सकते हैं? ट्रूथ टेबल, कंपाउंड प्रोपोजिशन। हमने कंजंक्शन देखा, डिसजंक्शन देखा। पी सबसे पहले एंड होगा। ये देखिए सेकंड कंडीशन। How can you be a successful student? There are many answers to that. One of the most केनेथ एच रॉजन साहब की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 देख रहे हैं। इसमें सॉल्यूशन की हिंट लेंगे। फाउंडेशन है लॉजिक और प्रूफ्स। सेक्शन 1.1 में है प्रोपोजिशनल लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है, तो आप सिंपली कह सकते हैं, तो यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट मतलब होता है IFF, इफ एंड ओनली इफ। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? P डबल इंप्लाइज Q, P डबल इंप्लाइज Q। ये इसका उत्तर है। अगर आपका your guarantee is good only if you bought your CD। केनेथ एच रॉजन साहब के जो पहला चैप्टर है उसका 1.2 देख रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रोपोजिशन क्या था? Discrete mathematics and its application. The content is from Kenneth. What will write? It is not the case that P, I will propositional logic. In discrete mathematics, we'll be talking about the rules of inference. That means if something has been said, what we can infer from it, what we can take out from it. So what we have seen up till now is the arguments. What is argument? These are just the statements, and by argument we say sequence of statements that ends with conclusion. Now we want them to be valid. For that, those statements to be valid, that is, if we have a premise, these are called premises, the preceding statements, and then we have something called as conclusion. So these premises should give or should say something about the conclusion, or conclusion should be inferred from the premises. So we'll see about the fallacies also. Fallacies means incorrect reasoning. That means the sentences or the statements which are given, which are so said that the conclusion is always wrong. Yes. First of all, what is equivalency? Propositional logic. In propositional logic, first of all, what is propositional logic? In propositional logic, first of all, what is
Do you think generic products actually work? Like this face pack? I don't think so. हेलो एवरीवन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ। सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रूफ हैं और उसमें हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ। बहुत सिंपल है इसका कंसेप्ट। अगर हमारे पास कोई एक स्टेटमेंट गिवन है कि P डिराइव्स Q, या फिर P के होने से Q होता है और हमें इसको प्रूफ करना है, तो हम क्या कहते हैं डायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है, अ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ दिस P टू Q is a logical valid argument in which we start with the assumption that P is true। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड वाले को मान लेते हैं कि वो ट्रू है, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो ट्रू है। उसके बाद हम बाकी के एग्जाम्स और P को यूज करके डायरेक्टली ये प्रूफ करते हैं कि Q भी ट्रू होगा। सो बेसिकली इसमें क्या है, assume that P is true, P को तो assume कर लो ट्रू है, उसके बाद प्रूफ करो कि Q भी ट्रू होगा। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को अज्यूम कर लो कि वो ट्रू है और उसके बाद बाकी के एग्जाम्स और लेफ्ट हैंड साइड की स्टेटमेंट को यूज करते हुए ये प्रूफ कर दो कि जो राइट हैंड साइड है वो भी ट्रू होगा। तो वो होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ। तो इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, तीन मैंने क्वेश्चंस लिए, इन तीन क्वेश्चंस को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ के मेथड से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हमें इसका डायरेक्ट प्रूफ देना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज ऑड, कि जो दो ऑड इंटीजर होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी ऑड होता है। तो देखो सिंपल, अगर हम देते हैं दो इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स लेट अस से 3 and 5, तो 3 और 5 का जो प्रोडक्ट है वो कितना आया, 15, वो भी ऑड है। ऐसी चलो ले लेते हैं 5 and 7, इनका प्रोडक्ट क्या है 35, ये भी ऑड है। तो वैसे हमने डायरेक्ट देख लिया, मैथमेटिक्स से देख लिया कि ठीक है ये ट्रू है। अब मुझे इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं दो ऑड इंटीजर्स ले लूंगा। सो बेसिकली अब हम क्या कह रहे हैं, वी आर सेइंग दैट P implies Q, और P स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, और Q क्या है, उनका जो रिजल्ट है वो भी ऑड है। तो लेट अस टेक टू इंटीजर्स। सो मैं ले लेता हूं x and y be टू इंटीजर्स और द अदर से ऑड इंटीजर्स। तो देखो x अगर एक ऑड इंटीजर है तो वो क्या होगा, मैं कहता हूं कि वो है 2n+1।
संडे है, मेरी छुट्टी है, आपकी नहीं है क्या? हमारे लिए क्या संडे और क्या मंडे। पापा, आज ड्राइव पे नहीं, साइकिलिंग चले? प्लीज। अच्छा, आप छुट्टी लो। जीनियस वही जो औरों की खुशी में पाए अपनी खुशी। पार्ले जी माने जीनियस। मैं कहता हूं कि वो है 2n+1। अब 2n+1 क्यों करा? क्योंकि ऑड को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मुझे 3 को रिप्रेजेंट करना है तो n की वैल्यू क्या होगी उस केस में 1। 2 × 1 + 1 3। 5 को करना तो क्या होगा, n की वैल्यू 2। 2 × 2 + 1 5। ऐसे ही y मेरे पास हो जाएगा एक और, लेट अस से 2m+1। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो x y का, देखो कि क्या आता है। 2n+1 × 2m+1। ठीक है, अब जब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट 4mn + 2n + 2m + 1। ठीक है, यही मिलेगा। अब यहाँ पे मैं इसमें 2 को कॉमन ले सकता हूँ, 2 को कॉमन ले लो तो कितना हुआ, mn + n + m + 1। क्लियर? अब देखो कि आपके पास ये जो मिला आपको, ये क्या है? तो मैं इस पूरी टर्म को तो एक इंटीजर मान सकता हूँ। लेट अस से दिस इज a। इस पूरी टर्म को भी एक इंटीजर मान सकते हैं। तो ये क्या बन गया? इट विल बिकम 2a + 1। ठीक है, सो बेसिकली हमने क्या माना था? वी हैव अज्यूम दैट दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, 2n+1 इज ऑड, 2m+1 इज ऑड। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो भी ऑड है। अब देखो x और y को जब मैंने प्रोडक्ट किया तो मुझे फाइनल में क्या मिला? 2a+1। किसकी फॉर्म में? सेम इसी की फॉर्म में, और जिसको हम अज्यूम कर चुके हैं कि ये ट्रू है, ये ऑड होता है। सो दैट मीन्स, दैट शोज दैट दिस इज ऑल्सो एन ऑड इंटीजर। अब जब ये प्रोडक्ट ऑड इंटीजर आ गया, दैट मीन्स हमने इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर। ठीक है, so now we will solve two more so that it will be more clear to you how to solve the questions based on direct method of proof. तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि एक जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर भी इवन होता है। तो पहले सिंपल देख लेते हैं कि देखो 2 इवन है, इसका स्क्वायर क्या होता है 4, वो भी इवन है। ऐसे चलो 4 का स्क्वायर देखते हैं कितना होता है 16, ये भी इवन है। तो मैथमेटिकली तो हमने देख लिया कि ठीक है ये करेक्ट होता है। अब इसे हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो हम लेंगे एक इवन नंबर, लेट x बी एन इवन नंबर। तो x की वैल्यू क्या होगी 2n। इवन नंबर हम ऐसे ही शो करते हैं, जैसे अगर मेरे को 2 शो करना है तो n की वैल्यू क्या होगी 1, 4 करना है तो n की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, अब देखो हमने इसको तो मान लिया कि ठीक है ये इवन है, कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इवन होता है, वो हमने अज्यूम कर लिया, p है वो ट्रू है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि जो इसका स्क्वायर है वो भी ट्रू होगा। तो इसका स्क्वायर करो, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2n का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है 2 × 2n स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस पूरी टर्म को एक इंटीजर मान सकता हूं, मतलब मैं इसको अगेन लेट अस से मैंने a मान लिया, तो ये क्या हो गया x स्क्वायर हो गया 2a। अगेन अब आप देख रहे हो कि किसी भी इंटीजर को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो क्या होता है इवन होता है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। हेंस x स्क्वायर इज ऑल्सो इवन। ठीक है, तो इनमें जब एंड में हम लिखते हैं तो एंड में हम लिखते हैं हेंस द रिजल्ट फॉलोज। ठीक है, क्लियर है कैसे किया हमने ये सॉल्व। चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें।
इसमें हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर, कि दो ऑड नंबर का जो सम है वो इवन होता है। तो देखो P हमने ले ली एक स्टेटमेंट कि दो ऑड नंबर है, लेट अस से x इज ऑड एंड y इज ऑड नंबर, और हमें क्या प्रूफ करना है, क्यों क्या हमारे पास कि x प्लस वाई इज इवन, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब हम अगर कह रहे हैं कि x और y मेरा ऑड है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2n प्लस 1, y को क्या लिख सकता हूँ 2m प्लस 1। अब इन दोनों को सम करो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ऐसे 2 कॉमन ले लेते हैं a, तो ये किसकी फॉर्म में आ गया 2a, और 2a आपको पता है जैसे हमने यहाँ पे कोई प्रूफ किया वो क्या होता है इवन नंबर। सो हम लिख सकते हैं हेंस x प्लस वाई इज इवन। तो ये कितना आ गया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2a आ गया हमारे पास, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सम होता है दो ऑड इंटीजर्स का वो क्या होता है इवन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस द रिजल्ट फॉलोज। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ। हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसके अंदर 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप इसमें और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसका प्रूफ करना है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू। Welcome to the R Toolkit, a new course on Programming.com. This is a beginner level programming course that will teach you the fundamentals of हेलो एवरीवन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ प्रूफ्स। तो बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप के इनडायरेक्ट मेथड हैं, एक तो है प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिटिव और एक है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली कंसंट्रेट करेंगे पहले इनडायरेक्ट मेथड पे जो है प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिटिव। सो थ्योरी के साथ साथ हम इसमें 3 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प मिल सके। तो शुरू करते हैं लेक्चर। पिछले वीडियो में हमने जिसमें डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ देखा था, वहां पे हम क्या करते थे कि हम मानते थे लेफ्ट हैंड साइड हमारी ट्रू है, p ट्रू है, तो हम ड्राइव करते थे कि q भी ट्रू होगा। अब जब देखो इसमें हमें क्या करना है, कॉन्ट्रापोजिटिव, उल्टा करना है बेसिकली। और एक ये लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है कि अगर मेरे पास ऐसे दिया हुआ है p से q, then it is logically equivalent to is contrapositive। contrapositive का मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, जैसे मैंने यहाँ पे ले गया, और उसको इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो, नॉट कर दो, और राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और अगेन उसका नॉट कर दो। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नॉट ऑफ q implies नॉट ऑफ p। ठीक है, अब इसको हम देखो ट्रूथ टेबल से भी शो कर सकते हैं। अगर आप ट्रूथ टेबल बनाते हो एक, सो लेट अस से दिस इज true true, false false, and this is true false true false। तो सिंपल जब हमारे पास p और q की ये वैल्यू है तो इसमें क्या आएगी, इसमें आएगी हमारे पास, ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। अब इसका उल्टा कर दो, p का उल्टा नॉट p, तो क्या हो जाएगा f f t t। ऐसे ही नॉट q किया तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स p की तरफ। इन दो को देखो बेसिकली, एक तो इसको और एक इसको मैच करते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू है, तो हम कह सकते हैं दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब हमें देखो इसमें करना कैसे है। प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिटिव में हमें प्रोसीजर क्या फॉलो करना है,
अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि P से Q की तरफ जब हम जा रहे हैं, या P जब इम्प्लाइज कर रहा है Q को या ड्राइव कर रहा है Q को, ये ट्रू कब होगा? जब मैं ये प्रूफ कर दूं कि अगर Q फॉल्स है तो P भी फॉल्स होगा। ठीक है, अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं कि अगर Q फॉल्स है तो P भी फॉल्स है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा। बेसिकली यही है इसमें। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा कि इसको मैं करना कैसे है। क्वेश्चन क्या है? P ट्रू है तो Q भी, कि अगर Q फॉल्स है तो P भी फॉल्स है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा। बेसिकली यही है इसमें। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा कि इसको मैं करना कैसे है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट इफ n स्क्वायर इज ऑड देन n इज ऑड। तो बेसिकली मैं एक स्टेटमेंट P के गिवन है, P गिवन है n स्क्वायर इज ऑड, और हमें क्या प्रूफ करना है कि n भी ऑड हो। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है इसमें? इस चीज को प्रूफ करना है। अब मेथड बाय काउंटर पॉजिटिव क्या कहता है कि इसको उल्टा कर दो, इसकी साइड चेंज कर दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ बाय काउंटर पॉजिटिव। तो इसमें करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये प्रूफ करना है नॉट ऑफ क्यू नॉट ऑफ, ठीक है ना? ये तो क्लियर है सबको, यही चीज करी हमने। अब देखो, अगर Q देता है कि n ऑड है, तो नॉट ऑफ Q क्या होगा? नॉट ऑफ Q होगा n इज इवन। उसे उल्टा कर देंगे ना, ऑड की बजाय क्या होगा? इवन होगा। और ऐसे ही नॉट ऑफ P क्या हो जाएगा? अगर मैं कह रहा था कि n स्क्वायर ऑड है, तो हो जाएगा n स्क्वायर इज इवन। और अब हमें इसको बेसिकली डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ का कांसेप्ट यूज करके प्रूफ करना है। तो देखो क्या करना है, n कितना होगा? n होगा सपोज लेट अस से 2x, तो n स्क्वायर कितना होगा? और यहाँ पे आपको लिखना है कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, सो n स्क्वायर क्या होगा? 2x का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। 2 कॉमन ले लो तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर को मैं कोई भी एक इंटीजर मान सकता हूँ। लेट अस से मैंने इसको मान लिया a। n स्क्वायर कितना हो गया? 2a। और ये आप जानते हो किसी भी इंटीजर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो क्या होता है? इवन। सो हेंस n स्क्वायर इज इवन। तो हमने अब क्या करा? हमने ये प्रूफ कर दिया दैट व्हेन दिस इज ट्रू नॉट ऑफ p इज ट्रू।
दिस वी हैव प्रूव। अब अगर ये ट्रू है तो जो इसका काउंटर पॉजिटिव अगेन काउंटर पोजिशन वो भी ट्रू होगा। दैट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट P से Q की तरफ जब हम जा रहे हैं ये भी ट्रू है, ठीक है, बिकॉज it is this is the logical equivalent of this। ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं अब, we can say that the statement when n square is odd then n is odd is true। so एंड में हम लिखेंगे hence the result। सो बेसिकली देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में करना क्या है, पहले इन्वर्स कर दो पूरा, उसके बाद डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ को लगा के प्रूफ करना है इन्वर्स वाली पार्ट को, इन्वर्स वाली इक्वेशन को, और फिर लॉजिकल इक्विवेलेंस से हमें ये कह देना है कि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट थी वो भी ट्रू है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस ऑन प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन। तो पहला क्वेश्चन क्या लिया है, स्टेटमेंट गिवन है प्रूफ दैट इफ x and y are two integers such that xy is odd then both x and y are odd। तो हमें देखो p क्या गिवन है, हमें p स्टेटमेंट गिवन है ये वाली xy is odd। ठीक है, xy is odd हमें गिवन। You pop your eyes in. You reset your nervous system. Would it be correct in saying that this is the most expensive rehab in the world? I would say that's probably the truth. You're coming here as an addict, extremely vulnerable. Helps with the circulation. This creates more energy. It's the diagnostic and the treatment. Bioresonance tests which have no scientific backing. I just don't know how you could do it. I actually thought that the money was good. It was very long. If you carry on, you will develop a habit. You know what you're feeling now? और Q क्या गिवन है, Q गिवन है कि x और y दोनों ऑड हो, ये वाली चीज। सो x एंड y आर ऑड। ठीक है, अब हमें इसको प्रूव करना है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये चीज ट्रू है। अब हम करेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन। So now by method of contraposition या contrapositive, हमें क्या प्रूव करना है, ये चीज। ठीक है, अब इसमें अगर हम उल्टा कर रहे हैं नॉट ऑफ Q, तो नॉट ऑफ Q का मतलब क्या है, x एंड y आर इवन। ठीक है, और नॉट ऑफ P का मतलब क्या है, एक्स वाई इज इवन। अगेन इसमें दो केस हो सकते हैं कि ठीक है दोनों ऑड नहीं है, तो हो सकता है ना अगर इसका नॉट क्या हो कि एक ऑड है एक इवन है, तो इसमें हम दो केस ले सकते हैं, बट अभी मैं आपको सिर्फ एक केस से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, सेकंड केस को आपको खुद सॉल्व करना है। और मैं जो केस ले रहा हूँ वो है कि दोनों आपके इवन है। तो जब x और y मेरे इवन है तो x क्या ले सकता हूँ मैं, x को पहले ले सकता हूँ 2n where n belongs to any set of integers, और y को मैं ले सकता हूँ for example 2m where m belongs to any set of integer। तो xy कितना हो गया, xy हो गया 2n into 2m which is equals to 2 into 2mn, और इस चीज को 2mn को मैं कोई भी एक इंटीजर अज्यूम कर सकता हूँ, लेट अस से मैंने इसको अज्यूम कर लिया a, तो ये कितना हो गया xy, अब xy हो गया 2a, और हमें पता है कि ये क्या होता है, इट इज एन इवन, सो इट मीन्स दैट xy इज इवन। तो हमने इस चीज को प्रूव कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने इसको प्रूव कर दिया
कि ये एक्स वाई इवन है, दैट मीन्स नॉट ऑफ पी इज ट्रू। इसका मतलब मैंने इस चीज को होल्ड कर दिया। अब जब इस चीज को होल्ड कर दिया है तो मैं कह सकता हूं बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस दिस इज ऑल्सो ट्रू। यही तो करते हैं मेथड ऑफ काउंटरपोजिशन में। ये केस वन था जिसमें एक्स और वाई दोनों मैंने इवन लिए थे। अब आपको क्या करना है, इसमें एक को इवन लेना है और एक को ऑड करना है और उसके बाद देखना है कि क्या ये रिजल्ट ट्रू होल्ड होगा या नहीं होगा। अगर एग्जाम्स में आपको आता है तो आपको दोनों केसेस करके दिखाने, ठीक है। तो सेकंड केस बेसिकली आपका असाइनमेंट है और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा फिर से। नाउ लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। हमें यहाँ पे इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना है कि अगर 3n + 2 ऑड है तो n भी ऑड। तो बेसिकली p हमें क्या गिवन है, p गिवन है 3n + 2 इज ऑड और हमारे पास q क्या है, n इज ऑड। हमें इस चीज को प्रूव करना है बाय मेथड ऑफ काउंटर पॉजिटिव। हमें ये प्रूफ करना है। अब नॉट ऑफ q का क्या मतलब है, n इज इवन। नॉट ऑफ p का क्या मतलब है, 3n + 2 इज इवन, ठीक है। अब देखो अगर मेरा n इवन है तो n को मैं क्या ले सकता हूँ, 2a। इवन है तो 2a ले सकते हैं। इसको मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ 3n + 2 में, तो देखो क्या होगा, 3n + 2 कितना हो जाएगा, 3 × 2a + 1 लेट अस से मैंने 2b तो दिया। हमने इसको तो प्रूफ कर दिया कि अगर मेरे पास n इवन है तो 3n + 2 भी इवन होगा। तो मैं सिंपली बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस कह सकता हूँ दैट p also implies q then it is also true। मतलब अगर 3n + 2 ऑड होगा तो n मेरा ऑड होगा बाय लॉजिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। So these are some of the questions on methods of proof by counterpositive। इसमें आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। जितने क्वेश्चंस है कि आप प्रैक्टिस खुद करोगे उतना आपको ये ज़्यादा इजीली समझ में आएगा और एग्जाम्स में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such videos. हेलो एवरीवन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रूफ और आज भी हम एक इनडायरेक्ट we have completed our target of having 4 sessions. It's good. How much time we consume? Stream is already 4 hours long. I'm so tired. It was so hectic, but I have to complete this like anyhow. Anyhow, I have to complete this night. I don't know how I'm gonna do this because I'm so tired. But I have to do it. My mid-sem is near. I have to do it. I will do it for sure.
First, let me take a break. No.
Okay, so we will start time. एक मेथड ऑफ प्रूफ देखेंगे और इसको हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. सो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन इज आल्सो एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूफ. इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? इन दिस वी अज्यूम दैट q इज फॉल्स. कि हम राइट हैंड साइड वाले को ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो फॉल्स है, या फिर हम ये कहते हैं कि नॉट ऑफ q इज ट्रू. ठीक है. देन बाय लॉजिकल आर्गुमेंट वी अराइव एट अ सिचुएशन वेयर दिस नॉट ऑफ q implies a contradiction. मतलब कि अगर हमें ये गिवन है तो हमने मान लिया कि नॉट ऑफ क्यू ट्रू है और फिर हम आगे हमने सॉल्व करना शुरू किया. बट लेटर जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम एक कॉन्ट्राडिक्शन की स्टेज पे पहुंच गए. कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि नॉट ऑफ क्यू जिसको हमने ट्रू माना था एक्चुअली में वो फॉल्स है. भाई अगर मैं कहता हूँ कि ठीक है एक चीज को मैंने कह दी कि ये ट्रू है बट एक्चुअल में वो फॉल्स है, तो आगे चल के मुझे कॉन्ट्राडिक्शन होगा.
तो वही चीज है कि हमने इसको जब ट्रू माना, बट आगे चल के हमने देखा है कि जब नॉट ऑफ क्यू को हमने ट्रू किया था वो फॉल्स है, विच इंप्लाइज दैट क्यू मस्ट बी ट्रू। ठीक है, सो ये इसका एक मेथड है। अब इसमें हम देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल सिंपल है कि अगर मेरे पास ये गिवन है, तो मुझे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से इसे प्रूव करना है। अब मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है कि अज्यूम कर लो कि आप Q जो है आपका राइट हैंड साइड वाला है वो फॉल्स है। सो वी अज्यूम दैट Q इज फॉल्स। और Q इज फॉल्स का मतलब क्या है, बेसिकली नॉट ऑफ Q इज ट्रू। यानी अब हम क्या कह रहे हैं कि Q क्या होगा मेरा, दैट N इज इवन। बेसिकली दिस इज नॉट ऑफ Q। सो नॉट ऑफ Q क्या हो गया, N इज इवन। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसके कॉन्ट्रडिक्शन से मैं इसको अगर प्रूफ कर सकता हूं तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये प्रूफ नहीं हो रहा या ये कुछ इवन आ रहा है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। चलो देखते हैं। अब 3n + 2 में n की इवन वैल्यू रखेंगे और n की इवन वैल्यू क्या होगी, लेट अस से 2k। तो ये हो गया 3 × 2k + 2 विच इज इक्वल्स टू, अगर 2 कॉमन ले लेता हूं मैं यहां से, 3k + 1। अब देखो ये कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, लेट अस से इसको मैं एक इंटीजर मान लेता हूं a। तो ये क्या हो गया, दिस बिकम्स 2a। और 2a का मतलब क्या है कि 3n + 2 इज इवन। बट देखो अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हमने स्टेटमेंट थी कि 3n + 2 ऑड है, जबकि हम जब सॉल्व कर रहे थे हमें मिल रहा है 3n + 2 इज इवन, which means that not of Q is false, which means that Q is true. ठीक है, so there is a contradiction now. So which means N is odd. Q is true. ठीक है, so इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं इसका पूरा हम, जिसमें हम क्या प्रूफ करेंगे इस चीज को। हमें प्रूफ करना है कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें इस चीज को प्रूफ करना है कि जो √2 है वो इर्रेशनल नंबर है। हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। सो वी अज्यूम दैट √2 इज रैशनल। ठीक है, हमने इसको अज्यूम कर लिया। और अगर ये रैशनल है तो मैं √2 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, √2 इज इक्वल्स टू x/y, where x and y are two integers and they don't have any common factor. तो इसमें आपको लिखना है where x and y have no common factor. ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 2 इज इक्वल्स टू x²/y², या फिर मैं कह सकता हूँ 2y² इज इक्वल्स टू x²। अब जब मैंने इस चीज को लिखा तो मैं ये क्या देख रहा हूँ, x² क्या है, x² इज अ नंबर जिसमें हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसी भी इंटीजर में 2 को से जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे x² मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x² इज एन इवन इंटीजर और इट इज एन इवन नंबर। अगर x² इवन है तो मैं ये कह सकता हूँ x इज ऑल्सो इवन। ठीक है, तो इस चीज को हम कह सकते हैं। तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x को मैं लिख सकता हूँ लेट अस से 2 की इवन नंबर के फॉर्म में मैंने लिख लिया इसे।
where k belongs to number of integers or set of integers. तो x स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 4k स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको भी मैं कह सकता हूँ 2 इंटू 2k स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। तो अब देखो जब x स्क्वायर इतना है तो मेरे पास जो y स्क्वायर है वो कितना होगा, इसी में देखते हैं। लेट अस से 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह ये रख देता हूँ 2 इंटू 2k स्क्वायर। सो लेट अस से 2 से 2 कैंसिल, तो y स्क्वायर क्या आ गया 2k स्क्वायर। सो अगेन y स्क्वायर क्या है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। सो हम कह सकते हैं y स्क्वायर इज ऑल्सो एन इवन नंबर, और अगर y स्क्वायर इवन है तो y इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ठीक है, y भी आपका इवन नंबर होगा। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, हमने क्या कहा था कि जो x और y हैं उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट अगर मैं कह रहा हूँ कि दोनों मेरे इवन हैं देन देयर शुड बी अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 इन बोथ x एंड y। सो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया विच सेज दैट, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको कुछ ना अलग से लिखना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट है हमारी ये वाली, देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन दिस। Since x and y are both even, two will be the common factor, और q क्या हो गया, x is equals to 0। Okay, now that's it. I completed my target finally. We'll revise tomorrow. Couple. Okay, so yeah, let me go. Bye bye. That's it from my side. This is Prasoon signing off. Be productive, be consistent. Peace out.